डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। My dear students, let's learn how to draw the graph of cubic function and how to solve question related to it. Here is one example I have considered. For a cubic function y is equal to x cube plus 3, and we are supposed to draw its graph for the values of x between -3 to 3. Now the range of values of x is given in this format by using scale 1 centimeter to 1 unit on x-axis and 1 centimeter to 10 unit on y-axis. And here is table already given. As I mentioned earlier in previous example video, that sometimes it may happen that some boxes are empty, but there is possibility all boxes are already filled. For this particular part A, we just need to label all these values, draw the curve, and then we will give answer all these questions with the help of that curve. Here, part B, as I mentioned earlier, there are some parts that are common in all sort of graph of functions. Here, find the value of y when the value of x is 1.5. हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 1.5 दी हुई है उसने, वहां पर जाकर ग्राफ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे. और सेकंड पार्ट नंबर सी, वी आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. एंड पार्ट नंबर डी, अगेन वी आर सपोज्ड टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x is equal to 1. And now we will move towards the graph. Alright, my dear students, as I told you, we will substitute all these points on coordinate axis. I have drawn this coordinate axis according to given scale mentioned in the question. And 1 unit equal to 1 centimeter along x-axis, and 1 centimeter equal to 10 unit along y-axis I have taken. And then it's a rough sketching of graph. When you will draw from graph, obviously everything will be accurate. But let's substitute these points. So -3, -4. I have substituted here. This is a -3x, and this is a -24. This is -20, and this is approximately -24. Then -2, -5. Here is -2, and down it's -5 approximately. Or here -1 and -2. Here is -1 and -1 and +2. Sorry, yeah, -1 and positive y-axis की तरफ वैल्यू ली. उसके बाद then 0 and 3, 0, +3, and then 1 and 4. This is 1, 4, positive y-axis की तरफ, and then 2 and 11. Here is x +2, and 11 is after 10. This is 1 unit up, and then 3 and 30, and here is x3 and y is 30. I labeled all these points, my dear students, and then I have drawn this curve. This is curve of a cubic function, and you can see all these curves are approximately equal to the small graph that we learned in interpretation of graph of functions. And now let's come towards the rest of parts of this question. In part, this part has done according to given information. We have drawn this graph, and now let's move towards part number B. We need to find the value of y when the value of x is equal to 1.5. Now here is the graph. Let's check where is x is equal to 1.5 first. X is equal to 1.5 is in the middle of between 1 and 2. 1 और 2 के दरमियान में somewhere 1.5 है. यहाँ से रूलर से डॉटेड लाइन लेकर जाएंगे टूवर्ड्स कर्व. जहाँ पर ये लाइन कर्व को टच करेगी, वहाँ से एक रूलर से लाइन लेकर जाएंगे आप टूवर्ड्स वाई एक्सिस. जिस पॉइंट पर आपकी इस लाइन में जो 1.5 x की वैल्यू से आई, उसने इंटरसेक्ट किया कर्व को, वहाँ से y एक्सिस पे जाएंगे, and this value is approximately equal to 5. We will write in front of 5. If we are writing answers here for all these parts, for example, part number B, when he says x is equal to 1, so therefore y will be equal to, y is here
5. This is the answer with the help of graph I have found here. Now let's move towards the next part. Solve x cube plus 1 is equal to 0. How can we solve it? Let's check it out at this place. This is part number C. We have given x cube plus 1 that we are supposed to solve with the help of graph. As I made you understand, in quadratic function it's the same process. We will write the function whose graph we have drawn here below this equation. Y equals x cube plus 3. The process is same. The equation that we wanna solve here, we will check how many terms are common in these two given equations. From the first we pick the part which is common, जो दोनों में कॉमन चीज नजर आ रही है, कॉमन टर्म नजर आ रही हैं, एक है, दो है, तीन है, जितनी है उनकी वैल्यू पहली इक्वेशन में से निकालेंगे और दूसरे फंक्शन में पुट कर देंगे. अगर हम देखें यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों में इक्वेशन में और फंक्शन में एक्स क्यूब कॉमन नजर आ रहा है, तो इसमें से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू -1. Let's substitute this value in this function whose graph we have already drawn. जो जिसका हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है उसके अंदर पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी y is equal to -1 plus 3 and this will give us y is equal to 2. Y is equal to 2 is the equation of a straight line. It's a single variable equation that we will draw on this graph to get the solution for this equation. Y is equal to 2 is from this origin towards positive direction 2 units. Here is 10, here is 5, 3, and so below this 3 where we have located this point, this is approximately 0.2. We'll draw this line that will pass through this one. This is line, we'll write here, this line is y is equal to 2. We have drawn with the help of these calculations we got, and this line will give the answer for this cubic equation from this graph. This line is intersecting our curve at this point. At this point, the value of x is -1. So, the answer for cubic equation in this graphic question is, therefore, x is equal to -1 is the solution for this particular equation with the help of this graph that we have already drawn. So let's revise it again. जब भी कोई इक्वेशन आपको ग्राफिकली सॉल्व करनी पड़े, उसका प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इक्वेशन में से जितना पोर्शन जो टर्म फंक्शन के साथ कॉमन हो उसकी वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमेशा आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है. This linear equation you are supposed to draw on this graph, and ये linear line, ये straight line जितनी जगह पर आपकी कर्व को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उतने पॉइंट x के आपका आंसर होता है. That they are the answers for your this equation, given equation. Now move towards part number D, and part D is we are supposed to find the gradient of the curve at the point x is equal to 1. Here is x is equal to 1, and we need to find the line gradient with the help of tangent line. I will draw this line approximately that will touch this point at this point. This is the point where this line intersected, and we are supposed to find the gradient of this curve at this point. What is the method of finding gradient? हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन में कहा होता है ग्रेडियंट फाइंड करना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं. ऐसी लाइन जो उस पॉइंट पर कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे. इस साइड पे रूलर रखते हुए लाइन ड्रा की जिसने इस पॉइंट पर इस कर्व को इंटरसेक्ट किया. अब हमने इस लाइन की मदद से ग्रेडियंट फाइंड करना है. वी विल पिक 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. इस लाइन से ग्राफ की मदद से कोई से 2 पॉइंट उठाएंगे, एंड दे विल हेल्प अस टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व.
part number D. Sorry, this is part number D. Let's pick 2 points. 1 point is this is 1 and 4 I suppose point. We have already 1 and 4 point हमारे पास पहले से मौजूद है जिसमें से ये लाइन गुजर रही है straight line. And let's pick one more point on this whole line with the help of graph, and approximately this point is looking convenient for me, and this is minus 0.5 and 0. इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इनकी मदद से मैं इस लाइन का इस कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करूंगा टेंजेंट लाइन की मदद से. देयरफॉर gradient is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 की वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे पास ये y2 है, ये y1 है, 0 minus 4 और ये x2 है, ये x1 है, डिवाइडेड बाई minus 0.5 minus 1. This will give us minus 4 divided by minus 0.5. Minus cancel with this minus, and therefore we will get this gradient equal to this is equal to finally the gradient is equal to minus cancel with this minus, and we got 40 over 5, and the gradient is 8. Well, let's see it again. Whenever we are supposed to find the gradient of curve at any particular point, we need to draw a tangent line at that particular point, and then with the help of graph हमें उस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट लेने हैं. अपनी इस लाइन को, इस टेंजेंट लाइन को ड्रा करने के लिए रूलर से एक्यूरेसी दिखानी है. Keep your ruler in a way that it must be balanced. This portion and this portion must be look equal. It should not incline towards some area a little more. Obviously, it will change your answer. तो इसको ऐसे रखें कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कर्व का और लाइन का अप्रॉक्सीमेटली सेम नजर आए, बैलेंस नजर आए. तो उस वक्त आपने लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट ग्राफ की मदद से, एक तो वो पॉइंट जहाँ से लाइन गुजर रही है, दैट्स इनफ. One more point on this line with the help of graph. Pick that point as I have picked here. ये वो पॉइंट जहाँ से लाइन गुजर रही है, ये मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाया और दोनों को ग्रेडियंट के फार्मूले में पुट करें, कैलकुलेट करें. You will get this gradient for this curve. So, as the previous question, as in quadratic equation and its questions and its example, the number of parts we learn is almost same with a little difference. Okay. ये बंद कर लगिए.